Hello friends, good morning all of you and welcome back our online class Maths 8th standard. Students, today we are going to continue our first chapter, that is the rational numbers. In previous video, already we have studied about that the properties of closure properties of addition of rational numbers, and also you have studied that what is that commutative property of addition of rational numbers. Yeah, but students, today we are going to discuss about that what is that associative property of addition of rational numbers and what is the extension of additive identity, or this is called as also role of zero. We are going to learn about this in this video, and also additive inverse or extension of additive inverse we are going to learn in this video. So first of all we will discuss about that what is the associative property. Okay students, so one thing you have to remember students, if any property, that means if the commutative property is satisfied in any cases, any operations, then it is compulsory to satisfy that associative property. Remember that if it is satisfied that commutative property, then that problems is also, that number series also will satisfy to the associative property. So in addition cases, commutative property is satisfied, so of rational number, same like also here associative also, associative property also will be satisfied. So see friends, what do you mean by associative property? जैसे हमने किया commutative property मतलब sum of any two rational numbers, मतलब in any order, the two rational numbers added in any orders, same like students here associative property means three rational numbers can be added any orders. So वो दो नंबर्स में ऐड कर रहे और उसका प्लेस चेंज करेंगे तो भी उसका वैल्यू अनचेंज हो रही. सेम लाइक वी हैव टू डू थ्री रेशनल नंबर्स, इफ यू विल ऐड एनी ऑर्डर्स then the result always constant, that whatever the sum, that what is that, it is always a constant. Let us discuss about that what is the associative property in of addition of rational numbers. So associative property, okay, so three rational numbers can be added any orders, कैसा भी चेंज करेंगे तो भी उसका वैल्यू अनचेंज होगा. So if a by b, c by d and e by f are any three rational numbers, ये भी एक rational नंबर है, c by d और एक rational नंबर है, और थर्ड rational नंबर है कि e by f, ये तीन को, ये थ्री rational नंबर को कैसे भी ऑर्डर पे ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू अनचेंज होगा. सपोज हमें कैसे लिखा a by b plus c by d plus e by f, इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट कर दिया, ये दोनों को ब्रैकेट किया और उसको अलग किया, लेकिन उसका राइट साइड में क्या किया, वो लास्ट दोनों को मतलब c by d सेकंड रेशनल नंबर एंड थर्ड रेशनल नंबर को ब्रैकेट में रखा और उसको फर्स्ट में रखा, तो ऐसा ऐड करेंगे तो देयर इज नो चेंज ऑफ दिस वैल्यू. So see, for example, we can understand so that this is LH side and this is the first bracket, and here the last two rational numbers already I have kept that brackets. So we can see that LH side and RH side. So let that proof. First of all, write down the proof. LHS, okay? LHS में हम प्रूव करेंगे. तो क्या है LHS साइड में रेशनल नंबर 3 by 4, 1 by 2, it is bracket. First two rational numbers 5 by 3. Okay, is equal to, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को आपको विल सॉल्व. सो एलसीएम इज 4 मतलब 3 प्लस 4 को 2 रे डिवाइड कर 2 2 1 जा 2, ये ब्रैकेट रखो ऐसा, प्लस 5 by 3 इज इक्वल, इसको ऐड करो 5 by 4 प्लस 5 by 3, इसको एलसीएम फेर लो 12 को 4 रे डिवाइड में 3 5 जा 15 प्लस 12 को 3 रे डिवाइड में 4 4 5 जा 20. सो हाउ मच वी विल गेट 35 by 12. दिस इज LHS साइड. ठीक है, सेम लाइक RHS साइड में क्या होगा देखेंगे हमें. विल चेक इट. RHS 3 by 4 plus 1 by 2 plus 5 by 3. The last two rational numbers is we have kept in brackets. So now as usual we can operation 3 by 4 we can keep as usual hold, and this two rational number LCM is 6 to 2 divided into 3 3 1 is 3 plus 6 to 2 divided into 2 2 5 जा 10. ठीक है, और इज इक्वल टू 3 by 4 plus 13 by 6
Now LCM take that 4 and 6 LCM you can take that roughly here 4 and 6 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 4 3 जा 12 LCM होगा 12 को 4 डिवाइड में 3 3 3 जा 9 12 को 6 डिवाइड में 2 2 3 जा 30 जा 26 so 26 plus 9 is equal to 35 by 12 so check करो बेटे check करो everybody 35 by 12 LHS RHS also 35 by 12 hence what you proved LHS is equal to RHS hence proved so what we conclude that if any three rational number we can add their any order then the value unchanged so associative property is satisfied in what in addition of rational numbers okay of rational numbers in addition. So now we can discuss about that students extension of additive identity. Same like you have studied in that integer cases. What is that additive identity? Additive identity is called zero. ठीक है जो जीरो को हम क्या बोलते हैं additive identity. कौन सा इंटीजर्स में जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर ही होगा itself. Okay. Sum of any rational number and zero that result is that number itself. Whatever that number came. That number only. So 0 is called additive identity. 0 is called additive identity of either integers or rational numbers. Whenever we are taking rational numbers, so 0 is called additive identity of for the rational numbers. Whenever we are taking integers, the 0 is called additive identity for the integers. Suppose 5 is 1. Suppose we are taking integers. So 5 plus 0 is equal to कितना 5 है तो itself so 0 is called additive identity. Let us see in rational number cases the sum of any rational number and 0 कौन सा भी एक rational number का साथ 0 ऐड करेंगे तो is the rational number itself the result is that same rational number. For example if that condition if p by q is any rational number suppose we are taking p by q is as a rational number okay then what is that हमें क्या ऐड करेंगे 0 ऐड करेंगे तो p by q plus 0 is equal to p by q और हमें रिवर्स करके हमें भी चेंज करें कम्यूटेटिव लॉ में ऐसा करेंगे तो भी 0 plus p by q also p by q समझे क्या इधर में कम्यूटेटिव करके लिखा तो वैल्यू अनचेंज होगा p by q ही होगा दैट मींस p by q इज दैट सेम रेशनल नंबर सो कौन सा रेशनल नंबर पे 0 ऐड करेंगे तो वही रेशनल नंबर ही होगा any rational number can be added with the 0 then the result of the sum is the same rational number so here the 0 is called what is that additive identity. For example we can take 5 plus 8 so here I likha that 0 is called additive identity. Very important students 0 is called additive identity for the rational number p by q. p by q में 0 is called additive identity. 5 by 8 plus 0 कितना होगा मैम we can do is equal to 5 by 8 is equal to 0 plus 5 by 8 क्यों ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 0 में 5 by 8 करें तो भी 5 by 8 ही होगा so what is that additive identity 0 here क्या होगा here minus 9 by 5 ही होगा क्योंकि minus 9 by 5 के 0 ऐड करें तो सेम नंबर ही होगा और हम उसको भी कैसे लिख सकते भी 0 minus 9 by 5 ठीक है तो these are all about that what is that additive identity or role of 0 we can say ठीक है did you understand students what is that associative law or what is that additive identity or the role of 0 0 का रोल क्या है हमारा 0 कौन डिस्कवर किया मालूम है क्या हमारे इंडियन मैथमेटिक्स जो गुप्ता जो है ब्रह्मगुप्त जो वो वही डिस्कवर करे थे वो 0 का वो हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस so we are so that's what is that 0 is one additive identity okay so next we'll discuss about that what is the additive inverse ठीक है so students here extension of additive inverse हमें क्या पढ़ाया ना additive identity role of the 0 पढ़ाया मतलब 0 हमें ऐड करके तो सेम नंबर ही आएगा कौन सा वैल्यू चेंज नहीं होगा वही जो नंबर पे ऐड किया वही नंबर ही आएगा उसको बोलते हैं हम क्या है 0 को इसलिए बोलते हैं हमें एडिटिव आइडेंटिटी लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या होगा ना इफ p by q is any rational number याद रखो बेटे
p by q is any rational number, then there exists a rational number minus p by q, मतलब उसका नेगेटिव। याद रखो, जो रेशनल नंबर, सपोज p by q is a rational number, any rational number, then another only rational number we are taking, that is minus p by q, such that कैसे हम लेंगे, जो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 होगा। For example students, for integer cases already you have studied in 7th standard, so easily you can understand for that rational number also you can understand. I will explain to you. Suppose students see 5, what is the additive inverse of 5? What you should say, minus 5, क्यों, क्योंकि plus this is the 5 plus minus 5, what is the answer, 0। मतलब ये जो 5 है उसका अपोजिट साइन पे हम ले जाएंगे वो इंटीजर को, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 ही होगा। तो -5 इज additive inverse of 5, alternative can say, but now -5 is the additive inverse of 5, ठीक है। Suppose I will say -8, what is that additive inverse of -8? Now we will add a plus 8 is equal to 0, hence 8 is the additive inverse of -8, ठीक है। मतलब -8 जब होगा उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +8 होगा। जब +5 होगा उसका एडिटिव इनवर्स -5 ही होगा, ठीक है। सेम लाइक स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग रेशनल नंबर, सो सपोज 3/4 is a rational number, ठीक है। 3/4 is a rational number, what is the additive inverse, उसका साइन अपोजिट साइन हम ले जाके ऐड करेंगे, -3/4 जो है उसका अपोजिट साइन, तो माइनस और एक तो माइनस लगा दिया तो कितना होगा, ये 0 ही होगा, ठीक है। व्हाट इज दैट आंसर, दैट मींस -3/4 is the additive inverse of 3/4. Did you understand friends? So -3/4 is the additive inverse of 3/4, ठीक है। अभी देखो, such that p by q हमने लिया रेशनल नंबर, उसका अपोजिट साइन हमने लिया -p/q, इसको दोनों को ऐड करके तो 0 होगा, और हम चेंज करेंगे तो भी -p/q होगा, तो उसका अपोजिट माइनस है तो इधर माइनस माइनस करके हम पॉजिटिव कर दिया, तो ये दोनों को ऐड करके तो भी 0 होगा। तो दो रेशनल नंबर को हमें ऐड करेंगे तो 0 हो रही है, तो वही दोनों को हमें रिवर्सली हमें वी कैन से दैट दीज आर द but additive inverse of each other, means alternative you can say, okay। Where -p/q in this cases -p/q is called additive inverse of p/q। We can take that some example students, देखो, find the additive inverse of -6/5, another one दिया 3/4, again here दिया -2/3, ठीक है। So first cases हम लिखेंगे additive inverse of -6/5, क्या होगा ना, उसका जो साइन है माइनस है ना, उसका पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा 6/5। सेम लाइक बी क्या होगा, additive inverse of क्या है 3/4, इसका पॉजिटिव है तो मतलब माइनस नेगेटिव करना है, तो -3/4, ठीक है। सी -2/3, सॉरी, additive inverse of -2/3, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व दैट ये दोनों नेगेटिव नंबर से है, -2/3, इसका मतलब 2/3, क्योंकि नेगेटिव साइन बोथ तो कट होके पॉजिटिव हो जाएगा, और इक्वल टू उसका नेगेटिव साइन ही होगा, -2/3 इज द आंसर, ठीक है। ओनली याद रखो, जो भी साइन दिया उसमें में माइनस नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज इधर दिया -3/4, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4, तुम क्या करना है, उसका आंसर क्या होगा, माइनस करके -3/4, ठीक है। उसका माइनस ओनली मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या होगा 3/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस,
सपोज इधर दे दिया 5/8, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स, उसका नेगेटिव साइन और मल्टीप्लाई कर दो, -5/8 इज द आंसर. ठीक है. So I hope you have understand about that, what is that properties of, what is that associative property, and what is the additive identity, and what is the additive inverse. So and next we will discuss about that in subtraction cases कैसा होता, या all addition cases से 5 properties already I explained you. Same like subtraction cases closure property, commutative property, associative property, and extension of identity I will explain to you in the upcoming videos. So you have to complete exercise 1.2 in your homework. Thank you all of you.